मुझे अगर मर्चेंट नेवी में करियर बनाना है तो मैं किस रूट से इस पर्टिकुलर करियर में, इस पर्टिकुलर फील्ड में एंट्री ले सकती हूँ? हर रैंक के हिसाब से अगर आप ब्रेकअप करके बता पाओ कि क्या क्या सैलरीज होती हैं। हाउ मेनी कंट्रीज हैव यू ट्रैवल्ड सो फार? Well, I would name just a few that I haven't traveled till now. I've been almost everywhere. एंड कोई एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा जब वेदर बहुत खराब हो और आपको डर लगा हो? पायरेट्स मिले आपको कभी आपकी जर्नी पे, वॉयज पे? एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर के पास और क्या एडिशनल स्किल्स होने चाहिए? नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द क्यूरियस पॉडकास्ट। स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट क्यूरियस शर्मा। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का पॉडकास्ट है एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर के साथ जिनका नाम है मनन अरोड़ा। वो अभी चीफ ऑफिसर की रैंक पे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। मतलब मर्चेंट नेवी के करियर को हमने पूरा डाइसेक्ट करके रख दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम कितने रूट्स अवेलेबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कॉलेज की फीस कितनी होती है, कितना पे पैकेजेस होता है, जो कि आपका फेवरेट क्वेश्चन है। सो वी हैव कवर्ड एंड टू एंड एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट द मर्चेंट नेवी करियर। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना मर्चेंट नेवी में करियर बनाएं तो पूरा पॉडकास्ट देखना शुरू से लेके एंड तक। बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स मिलेंगे आपको और बहुत सारे पर्क्स के बारे में भी जानने को मिलेगा। मतलब एक आधे पर्क्स सुन के तो मैं बड़ा हैरान होगी। मैंने कहा यार बहुत अच्छे पर्क्स हैं, खुद को भी और फैमिली को भी। सो गाइज बने रहना, शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना अगर आप मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। आवाज बहुत बेसुरीली थी बट इमोशन एकदम मतलब दिल से निकला था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा हमें हेल्प करिए ग्रो करने में, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस लेकर आ सके। चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सो भाई फाइनली ये हमारा गाइस दूसरी बार अटेम्प्ट है ये पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने में। पहली बार हमने करा लेकिन कुछ कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो गया तो वो नहीं हो पाया। नाउ दिस इज आवर सेकंड अटेम्प्ट। वेलकम टू द शो मनन, हाउ आर यू डूइंग टुडे? Very well. How you are doing, Pooja? आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रेट, थैंक यू सो मच। बहुत सारे सवाल हैं मर्चेंट नेवी को लेकर और प्लीज बिल्कुल मुझे बच्चा ही कंसिडर करना एज इफ मैं एक क्लास 12 से निकली हुई स्टूडेंट हूँ या फिर मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल उस तरीके से मुझे कंसिडर करना। तो बिल्कुल सब बताएंगे आपको। I'll try to tell you everything. हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले और सबसे पहला बेसिक सवाल यही है कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर कौन होते हैं और वो करते क्या है एग्जैक्टली? Okay. So in India, a lot of commodities are imported, exported worldwide. So this trade is run through seagoing ships. So merchant navy officers collectively as a team work on ships to transport the cargo valuables from one country to another. And these cargoes could be oil, cement, grains, whatever you can think of. Whatever is transported in bulk is transported through the sea route. Merchant navy officers make sure that this is done in the correct manner. अच्छा, तो मतलब आप लोग ट्रांसपोर्टर हो बेसिकली, लेकिन सी के ट्रांसपोर्टर हो, राइट? कि एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाना। Correct. Well, करेक्ट। it seems like a transporter आप कह रहे हो तो it doesn't. It's way too different than driving a truck. There are a lot of things to be managed on a ship. And you have around 30 crew on ship, and हम्म, everybody has a different role around the clock. करेंगे, सारा डिस्कशन करेंगे। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर कि मुझे अगर मर्चेंट नेवी में करियर बनाना है तो मैं किस रूट से इस पर्टिकुलर करियर में, इस पर्टिकुलर फील्ड में एंट्री ले सकती हूँ? Okay, so first I'll tell you the first, the most preferred one. So after 12th grade, when you complete your school, हम्म। then you can join the course to become a deck officer or an engine officer. Okay. अच्छा। So first, for becoming a deck officer, there are two types of courses. Either you can go for BSc Nautical Science, that is a 3-year program. ओके। And the second option is you can go for DNS, Diploma in Nautical Science, ओके। leading to BSc Nautical Science. So in that case, you get a BSc degree also. अच्छा। But yes, the timeline is nearly similar.
But the added advantage in DNS is that after completing your 1 year program, you join ship, so you start earning stipend. Some money Hmm. comes to your pocket. Okay. So BSc and DNS. Yes. सो तो इसका जैसे कोई इंजीनियरिंग परस्यू करता है तो बीटेक का भी ऐसे कोर्स होता है जिसमें वो 4 साल का कोर्स होता है। तो इसमें जैसे आपने बताया ये 3 साल का कोर्स है अप्रोक्सीमेटली एंड दोनों को ऑलमोस्ट सेम टाइम है I was डीएनएस। coming to that. ओ ओके। Yeah. So this was for the deck officers. Okay. Then there are engine officers also on the ship. ओके। So for that, for becoming an engine officer, you have to pursue BTech program in marine engineering. ओके। That is a 4 year program. Other than that, if you have completed your engineering, you have done mechanical engineering, so then also you can pursue the GME program. I don't exactly know how much is the duration of that program right now, but हम्म। you can opt for that. ओके। जीएमई का फुल फॉर्म? Graduate Marine Engineer. ओके। ओके ठीक है। Then there's another one. If you have pursued electrical engineering, अच्छा। so there is another course for becoming an electrical officer on board. ओह ओके। Okay, so these are the officers, and after that, the last one, people can also join ships as ratings. See, the ship crew comprises of officers and crew also. So for becoming a ship's crew, you have to undergo training for that. That can be done after 10th grade also. After you complete your 10th grade, one can go for the GP rating course. It's about 6 month course. After हम्म। that, you can join ship. उसमें कोई मतलब वो मिनिमम एलिजिबिलिटी की क्लास 12th में पीसीएम होना चाहिए वो नहीं है उसमें? नहीं वो उसका ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है. राइट। और इसमें जो जीपी रेटिंग कोर्स है इसको करने के बाद मतलब किस पोस्ट पे जो है जॉब लगती है शिप पर? So after you complete the GP rating course, either you can join the deck department or you can start in the engine department. So if you ओके। start in deck department, you'll start as an ordinary seaman, then you become able-bodied seaman. Then the last promotion is you can become a bosun, or there are other petty officers also like the pump man. हम्म। So like नोट that ऑफ। you can do. Then there is catering department. For catering also you have to complete, your there is a course for catering. ओके। स्पेशली फॉर द सी राइट, केटरिंग स्पेशली Yes, फॉर द yes, सी। yes, yes. Especially for the sea because the chef must know how to cook continental food and all that. There are various हम्म। requirements by the flag state of ships. So ओके ओके। सो जस्ट टू समराइज, अगर आपको मर्चेंट नेवी में जाना है तो आप डेक ऑफिसर वाली लाइन में जा सकते हैं या फिर इंजन ऑफिस वाली लाइन में जा सकते हैं। डेक ऑफिस पे जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, बीएससी जो कि नॉर्मल 3 इयर्स का कोर्स है एंड right. डीएनएस विच इज जिसको करने पे 1 ईयर के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको स्टाइपेंड मिलेगा। Then if you want to join as in the engine office department, then there is BTech, which is a regular 4 year program, GME, which is for people who've done mechanical, and there is also like you can also become electrical officer अगर आपने electrical engineering करा हुआ है, and अगर आप crew join करना चाहते हैं तो rating GP rating करके कोर्स होता है, correct? Yes, correct. आप थोड़ा सा अमाउंट बता सकते हैं, फीस बता सकते हैं हर कोर्स की, कि किस कोर्स में कितना फीस लगता है, ताकि कोई भी अगर किसी पर्टिकुलर लाइन को चूज कर रहा है तो उसे आइडिया रहे कि मुझे कितने एक्सपेंसेस जो है अपने प्लान करने हैं। So I had pursued the DNS program from ARI Delhi during 2013 to 14. It's a very good college, हम्म। and so that time we had paid. I had paid around 4.5 lakhs for that. This included everything: the books, the courses, study, meals, everything was included. So, and I believe this is the best one to pursue. You complete a 1 year program. After that, you join ship. 18 months, you earn stipend.
Then again, you come back, you have good time to spend with your family, study, and after that, you can become an officer. करेक्ट. Yeah. टॉकिंग अबाउट अदर प्रोग्राम्स, आप उनका भी थोड़ा फीस का आइडिया दे सकते हो? Well, the fee for I think the engineering program will lie somewhere about between 8 to 10 lakhs, ओके. and yeah, this will be the for the 4 year program. For the 3 year BSc program also I think between 8 to 10 lakhs. ओके. ओके. ठीक है. अब ना हमारा फोकस थोड़ी देर के लिए डीएनएस विच इज डिप्लोमा एंड बीएससी पर रखते हैं. तो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताइए. और आपने बोला कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड वेज है डीएनएस, तो वो क्यों प्रेफर करना चाहिए? Okay, so first of all, for DNS, the fees will be comparatively less. अच्छा. Then after that, after you complete your program, you can join ship. The training period after completing the course हम्म. for DNS is 18 months. हम्म. For the BSc guys, it is 12 months. So the timeline falls nearly same when we compare both the guys. हम्म. But then, with DNS, the added advantage is that, you start getting stipend after you complete your course. Once you join ship, you start getting stipend. So you हम्म. can manage your expenses for further courses. And हम्म. training is also slightly longer, so you have more hands-on experience. हम्म. तो अगर मैंने अपना क्लास 12th कंप्लीट कर लिया है साइंस साइड से, मेरे पास पीसीएम था फॉर एग्जांपल, तो क्या मैं डायरेक्टली डीएनएस प्रोग्राम में एनरोल कर सकती हूँ? नहीं, उसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू हैव अ स्पॉन्सरशिप from ओके. a shipping company. So ओके. for that, for getting a sponsorship, you need to approach the merchant navy colleges. For example, I had approached ARI Delhi, हम्म. and I informed them that I want to join. So they called me when companies visit the campus हम्म. for hiring the guys, for हम्म. sponsoring the guys for this program. ओके. So basically, sponsorship is after completing your program, you will be joining ship, but it gets ascertained that which company you will join. It gets fixed prior you start the course. ओके. So the added advantage of this is that once you complete the course, you are already that you will be employed by this company. हम्म. That's a good thing. हम्म. While in other courses, the campus placement occurs at the end of program, nearly at the end. हम्म. विच इज लाइक So ऑब्वियसली दूसरे कोर्सेज की तरह की कोर्स खत्म हुआ फिर कैंपस होगा. that's right. हम्म. राइट. So first criteria will be for doing DNS, you need to be sponsored by a company. अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताओ कि व्हाई विल एनी कंपनी गिव मी स्पॉन्सरशिप? मतलब मैं कॉलेजेस को ऐसे रीच आउट कर रही हूँ, ठीक है, तो कोई भी कंपनी या फिर कोई भी कॉलेज मेरे लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढने में क्यों इंटरेस्टेड होगा? Okay, well, because this is the condition for getting admission. If you don't have sponsorship, the college cannot enroll you. Okay, ओके. for the ओके. course. ओके. This is the law by the government, so that this is to reduce the unemployment rate. हम्म. So your employment is ascertained in advance. पहले से ही ओके. पता होता है कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है. नहीं, मतलब ये जैसे आपने बोला कि मैं कॉलेज के पास गया था स्पॉन्सरशिप ढूंढने, तो उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे स्पॉन्सरशिप ढूंढ सकते हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से कॉलेजेस को अप्रोच कर सकते हैं जहां पर उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस हैं, कि आज की डेट में अगर Okay. कोई जाए तो उसे पता होना चाहिए. So sponsorship for the sponsorship program here in North India, you can approach ARI Delhi or हम्म. this IMI in Noida. These are good colleges, and हम्म. you can find a list of more colleges also which have DNS program on हम्म. the website of DG Shipping. Okay. ओके. So about this sponsorship, I would like to tell you what happens. The companies visit the campus, ओके. they conduct your test, they conduct your interview, and after ओके. that they shortlist you. ओह. So they already do your skill testing. Every company has a different criteria.
Hmm. but suggested to be prepared in the best manner, have a gentle appearance, Hmm. and just do some background checks. Try Hmm. to learn more about the profession. Hmm. Have an answer for this question, like why you want to join merchant navy. This is the prime question, Hmm. so you should be sure about it. हम्म। तो जो टेस्ट है रिटन टेस्ट और या फिर लाइक एक इंटरव्यू टाइप का टेस्ट होता है उस टेस्ट के बारे में थोड़ा आप बताएंगे। सो वेल सी, ये जो टेस्ट है आपके 12th कंप्लीट करने के बाद होता है, तो ऑब्वियसली रिलेटेड टू योर +2 ओनली क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, or हम्म। random questions. See, the company, every company is different. Everybody has a Okay. different criteria to hire, so they have their own criteria. हम्म। They have राइट। a different test. Some companies have mathematical tests. Some have aptitude. हम्म। So like that, you have to prepare. But whatever you have learned till 12th grade, that will be. ओके। ठीक है। सो यहाँ तो बात खत्म होती है डीएनएस और बीएससी के बारे में। एक मेरे पास बहुत ही स्वीट क्वेश्चन आया है, बहुत ही मासूमियत भरा क्वेश्चन है, वन एक स्टूडेंट का है। और वो क्वेश्चन है कि मैम ये पूछ लेना जरा कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में क्या डिफरेंस होता है। I was knew this was coming. I knew this was coming. Sorry. Okay. So, well, the Indian Navy is for the protection of coast, our ocean, Indian Ocean. या। So, they comprise of battleships, the ships that go for war. Okay. And merchant navy is more of commercial sector. Merchant navy contributes to the economy of India. तो बहुत ही सिंपल सा है बच्चों, इंडियन नेवी के लिए आपको जो डिफरेंट सेट ऑफ एग्जाम्स देना पड़ता है, मर्चेंट नेवी बिल्कुल ही इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। Yes. कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर, आपने जैसे बताया कि जब हम ज्वाइन करते हैं राइट, तो ट्रेनिंग होती है हमारी। तो थोड़ा सा आप Hmm. उस ट्रेनिंग के बारे में बताइए कि उस ट्रेनिंग में एक्चुअली आपको सिखाया क्या क्या जाता है, क्या क्या चीजें बताई जाती हैं, क्या आपको वो वॉयज पे लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं। Okay, well, so merchant navy training. हम्म। See, this training is totally specialized. Okay. हम्म। You will learn everything yeah, that you will do on ship, हम्म। starting from navigation, cargo work, ओके। okay, uh, about the ship stability, all the jobs that you have to do as an officer, you will learn in the campus. हम्म। ओके। Though you will go for training to get practical experience, but you हम्म। will learn everything about it in campus. अच्छा। Yes. ओके। Yes. So there are a lot of bridge equipments. The area where we work as deck officers, that हम्म। is called the bridge. Okay. हम्म। हम्म। So bridge is the place from where the ship is navigated. That is the हम्म। control room. So ओके। there are a lot of special equipments. So you must know how to use them properly in an adequate manner, or their maintenance, the care that you have to take, all that. So everything you are taught in during this program. And other things, see, there are co-curricular activities. Every morning you have, physical exercises. Like that's a physical training. So you ओके। stay fit also. हम्म। And so this is somehow the purpose of this is to build your core. You should have a better core so that you don't get seasick when you join ship. You know, हम्म। and it brings a sense of discipline also. Every day when you are within the academy, you wear a neat and tidy uniform. You learn how to keep yourself neat and tidy. Every day you are clean shaved. Then you take care of all your belongings, everything about you. हम्म। ऑफ कोर्स And बिकॉज। हम्म। it brings a self of a sense of independence, how हम्म। you have to handle yourself independently. करेक्ट। इतना ग्रूमिंग पे ध्यान इसलिए दिया जाता है बिकॉज यू आर वेर, कभी भी आप सामान मतलब लेकर जा रहे हो शिप पे, यू आर प्रेजेंट रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। सो जब आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, यू टू लुक योर फाइनेस्ट राइट। Yes, of course. See, the how to say, uh, the way you are imagining this is slightly different than it looks.
Okay. Okay. When you're on board ship, also you wear your uniform when Hmm. you're working. So Hmm. you must look a class apart. Hmm. That is the purpose. करेक्ट Yes. करेक्ट. अब ना एक बहुत ही फेवरेट सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं विच इज द सैलरीज पार्ट. तो सबसे फेवरेट होता है मना नहीं है स्टूडेंट को जानना कि अच्छा इस प्रोफेशन में इतना पैसा मिलता है, इस प्रोफेशन में इतना पैसा मिलता है. सो लेट्स ब्रेक डाउन सैलरीज फॉर फ्रेशर्स फॉर डिफरेंट रैंक्स दैट आर देयर. हर रैंक के हिसाब से अगर आप ब्रेकअप करके बता पाओ कि क्या क्या सैलरीज होती हैं. Okay, I'll try to give you a fair idea. हाँ जी. Well, salaries are great all the way. So you will never regret that you joined this profession. हाँ. And so when you start as a trainee, you get stipend that varies somewhere around 400 to 800 US dollars ओके. a month. ओके. Okay. Then once you clear your exams, you become a third officer or a fourth engineer. This is the first rank that you get after completing your training, getting your अच्छा. license. So that time you will be making around somewhere between $2,000 to $4,000 हम्म. a month. हम्म. And as you grow, the highest that you can get. See, the salaries vary totally upon depending upon your experience, the types of ship you sail upon, and other there are a few other criterias also. हम्म. The highest that you can get here as of now, when you become a captain, so that ओके. time you can get somewhere between 10,000 to 20,000 US dollars a month. ओह दैट्स अमेजिंग. Yeah, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 8 से 82 16 लाख lakhs. महीने में मिलते हैं. 8 to हाँ. 16 lakhs a month. मैं लाइक ओवरऑल निकाल रही थी कि अगर कोई $1 लाख कमा रहा है साल के तो अप्रोक्सीमेटली 82 lakhs हो गया पैकेज, राइट? हम्म. Too good to refuse, you know. या टू गुड टू बी ट्रू. Yeah. बट जैसे सैलरीज जो आपको डॉलर्स में ही मिलती हैं, आईएनआर ऑब्वियसली वो कन्वर्ट होके तो आईएनआर में ही आती होगी, बट सैलरीज यूजुअली डॉलर्स में ही क्यों होती है मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स की? Well, it's an international trade. तो शिप कहीं का है, बंदे कहीं के हैं. सैलरी एक स्टैंडर्ड पे चलती है इन यूएस डॉलर्स. अच्छा. So I would say there is another added advantage if you हम्म. join merchant navy. हम्म. So if see your employer is a foreign entity, so हम्म. your salary is coming from abroad. हम्म. So if you complete more than 6 months on ship during a financial year, you don't have to pay any taxes. हाँ, You ये जब हम अपनी सीए कर रहे थे तब हमने पढ़ा था उसमें. are- कि नेवी में है तो कैसे उनका टैक्स का जो है बेनिफिट मिलता है उनको. वॉयज पे हैं अगर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज 181 डेज अगर आउट ऑफ इंडिया रहे हैं तो वो आपका इनकम जो एग्जेम्प्ट हो जाता है. सो या गुड that's गुड. right. ये बहुत अच्छी बात है. और बाकी जो जनता है जो मर्चेंट नेवी में नहीं है, जो नॉर्मल अपना सैलरीज कमा रही है, उनको इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, वो एकदम परेशान हो जाएंगे ये बात सुन के कि हमें इतना टैक्स देना पड़ता है. The taxes are massive. It's a real pain. Trust me. Okay. आगे चलते हैं थोड़ा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. ये बताइए कि कुछ अगर मतलब जैसे आपने नॉर्थ में तो बता दिया ये टॉप कॉलेजेस हैं यहाँ रहे हैं द वन इन नोएडा, बट कैन यू वॉक अस थ्रू लाइक एनी ऑफ द टॉप कॉलेजेस दैट आर देयर फॉर मर्चेंट नेवी दैट एनीबडी कैन एटलीस्ट एक्सप्लोर कर सकता है, वो रिसर्च कर सकता है उनके बारे में? So well, I would say ARI is one of the best. I did my program from there. ओके. Then IMI is also great. ओके. Solani is great. ओके. And then you have LBS college also. ओके. This is in Mumbai. Then you have TS Chanakya, TS Rahman. ओके. There are many more in Chennai also. हम्म. There is AMET in Chennai, AMET. ओके. And then you can go to Anglo Eastern also. If you approach Anglo Eastern, so हम्म. Anglo Eastern itself is a shipping company. So they sponsor you and they also let you pursue the DNS program. That's interesting. Okay.
बीएससी में फर्स्ट जॉब कैसे लगती है? अगर मैं बीएससी की स्पेसिफिकली बात करूं, डीएनएस में तो जॉब आपकी पहले से ही कंफर्म्ड है, आपने स्पॉन्सरशिप ले ली है, आपका जो है प्रोग्राम में फीस आपको इकट्ठा करना है, एंड देन आफ्टर दैट यू गो टू द ट्रेनिंग। बट टॉकिंग अबाउट बीएससी, बीएससी में कैंपस कैसे काम करता है, जॉब्स कैसे लगती हैं बीएससी प्रोग्राम में? So BSc is a 3-year program. By the end of program, I think in the second last semester there हम्म is a placement round. So that हम्म time companies visit the campus. So that time there are hiring rounds, हम्म and if somebody misses out during that time, then हम्म। after off-campus hiring is also occur, or you can approach the companies directly. ओके ओके, वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपना लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, करियर पेजेस जो रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स के पेजेस हैं उनके उन पे जाके करियर पेजेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। Directly go to the company website. That's it. ओके ओके, ऑलराइट। आपने जैसे रैंक बताई थी, तो एक आपने थर्ड ऑफिसर की रैंक बताई थी, एंड देन जब आप कंप्लीट कर लेते हो अपना एग्जाम वगैरह तो थर्ड ऑफिसर, एंड देन यू टुक इट टू द लेवल ऑफ कैप्टन। तो बीच में कौन सी रैंक्स हैं और हर रैंक पे प्रमोशन होता कैसे है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। So, well, there's a long hierarchy with this. हम्म You start as a cadet. Okay. हम्म। I'm talking about the deck department first. Okay. ठीक है ठीक है। So, you start as a cadet. हम्म Then, the first rank that you attain is you become a third officer. हम्म। And after that, the next one is you become a second officer. अच्छा, ओके Further, then you become a chief officer. ओके। And the highest one on board ship is captain, हम्म master. हम्म। एंड हर लेवल पे प्रमोशन कैसे होता है? So about the promotions, see there are various criteria. First are the personal ones. You have to, attain the license for that rank. For example, you want to become a chief officer, so you need to clear the chief officer license from DG Shipping of India. ओके Complete your courses. Then you have to, have some sufficient sea time. You should be prepared for the rank. You should be prepared for the jobs. हम्म So you have to learn the jobs in advance when you are on board ship. And then the last thing that depends on your company. So if they have vacancy or you have to approach them, just inform them that you are ready. So then they will plan accordingly and to promote you. तो आपने बोला लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके लिए कुछ एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं डिजी शिपिंग से। तो Yes. मतलब हर लेवल के लिए अगर मैं थर्ड इंजीनियर से सेकंड इंजीनियर ऑफिसर बनना चाह रही हूँ, तो मुझे उसका भी एग्जाम देना पड़ेगा, फिर मुझे चीफ ऑफिसर के लिए भी एग्जाम देना पड़ेगा, फिर मुझे कैप्टन के लिए भी एग्जाम देना पड़ेगा। Yes. पढ़ाई तो बहुत करनी पड़ती है. See, the idea is that you should have proper knowledge and you should be adequately prepared for the rank. Theoretically, you must know everything, and after that, you learn the job on board, so you become practically prepared also. Because these jobs hold extreme level of responsibility on your shoulders, so हम्म you must be very well prepared. राइट। और जैसे एग्जाम मान लो क्लियर नहीं हुआ, तो मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं एग्जाम दोबारा दे पाऊँ? Yes, yes, of course, you can definitely appear. ओके ओके। और ये एग्जाम कैसे क्या होता है? फिजिकल सेंटर होता है इनका कि ऑनलाइन देने होते हैं, या फिर किस तरीके से होते हैं एग्जाम्स? There are bunch of exams. First, you have to complete your courses. तो institute का exam अलग रहेगा. Then at the end of course, nowadays you have a separate exam by DG Shipping. हम्म So that is online. ओके Then after that, for the competency courses, the main competency courses, you have written exams initially. And after that, you have oral exams. Nowadays, the oral exams are conducted online. हम्म So yeah, this is added advantage. Things have changed. Earlier, you had to appear at the center. राइट, अब तो जूम का जमाना है। अभी आपने ये जो सारी रैंक्स बताई हैं, ये आपने डेक की बताई हैं। अगर आप इंजन की बात करें तो उसकी रैंक्स अगर आप बता सके।
So in the engine department also, you start as an engine cadet. That is the first rank. Hmm. Then once you clear your license, you become a fourth engineer. Okay. Then the next one is third engineer. Okay. Then there is second engineer. Okay. And the final one is chief engineer. Chief engineer is head of the engine department. ओके इन हाँ इनका तो ऑब्वियसली कैप्टन नहीं होगा ना. Yes. हम्म. सैलरीज दोनों की ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, चाहे वो इंजन डिपार्टमेंट हो चाहे डेक डिपार्टमेंट हो, या फिर सैलरीज Yes, yes. डिफर करती हैं? नहीं सेम रहती है. Nearly same. ओके ओके ठीक है. वो तो फिर आई थिंक देन इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट. मतलब सैलरीज शुड नॉट बी अ बेसिस फॉर यू टू डिसाइड कि आपको डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है या फिर आपको इंजन डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है. Yeah, salaries are same. हम्म. The difference is totally in the work. In the engine side, the jobs are, more of technical jobs, while in the deck department, it's more of planning, management, एंड and स्ट्रैटेजी. yes. ठीक है. कुछ और एडिशनल पर्क्स बताइए ऑफ बीइंग द मर्चेंट नेवी ऑफिसर. बाहर से ये जो दुनिया है हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, दैट यू गाइस आर हैंडलिंग लार्ज शिप्स और इतने इतने दिन बाहर रहते हैं, यू गेट टू ट्रैवल सो मच. बट ये सिर्फ हमने बाहर से सुना है. आप थोड़ा, यू बीइंग अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर योरसेल्फ, टेल अस अ फ्यू पर्क्स ऑफ बीइंग द मर्चेंट नेवी ऑफिसर. So, well, there are a lot of added advantages. First हम्म. of all, uniform that you get to wear itself is a, big sense of pride. हम्म. Then, obviously, as you told, you handle big ships. हम्म. So, and then you travel the world. I don't know, but merchant navy is one of the professions that pays you so well to travel the world. राइट. Then you get to, visit a lot of countries, हम्म. learn a lot of, different cultures from different people from, हम्म. and you work with people from different nationalities also. हम्म. Then about the food, you get to try different cuisines. हम्म. Every year you get to travel when you go on board the ship. So before joining the ship, if there is a halt, so that time you get hotel stays also. So wherever you are, you can explore that city or that country. हम्म. So always you have a good time. Things are great. You हम्म. get to learn a lot about the world. हम्म. आपकी Yeah. फैमिली को क्या पर्क्स मिलते हैं? मतलब ये तो आपके इंडिविजुअल हो गए. डज योर फैमिली आल्सो गेट एनी एडवांटेज और एनी पर्क्स? Well, yes. On senior ranks, you can carry your family also on board the ship, so they also can witness the job that you do, or and visit the world, explore the world with you. हम्म. And further, then varies from company to company. But nowadays, most of the companies give you medical insurance for the family, and while you are working on board also, if some mishappening occurs, हम्म. so you are insured. Your family will get a handsome amount. कॉम्पनसेशन. राइट. Yes. तो मतलब घूमने फिरने को तो काफी मिल जाएगा आपको भी और अपनी फैमिली को भी. बिल्कुल. हाउ मेनी कंट्रीज हैव यू ट्रैवल्ड सो फार? Well, I would name just a few that I haven't traveled till now. I've been almost everywhere. Oh, that is pretty interesting. Uh, ठीक है. तो क्या कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट भी मर्चेंट नेवी में जा सकता है? अगर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर बन सकती हूँ क्या? well, unfortunately, no, you can't. But for cruise ships, the requirements are slightly different in certain departments. So there you can give a try. ओके. तो मतलब मैं क्रूज शिप पे ज्वाइन कर सकती हूँ, मर्चेंट नेवी ऑफिसर नहीं बन सकती? Sorry. ठीक है ठीक है ठीक है. थोड़े से अपने कुछ इंटरेस्टिंग जर्नीज बताइए जो आपने ऑन द शिप रह के करी है. कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस बताइए अपने.
Well, uh, I guess I was 19 years old when I went to join my first ship, Hmm. and that time I boarded the flight for the first time, an international flight, all the way to US. Hmm. And then, while landing, my ears were, paining. There was a lot of pain. Hmm. And then the guy sitting beside me, he told me that, oh, you hold your nose and blow it. You must know these things. Anyway, you get to learn a lot with time. But when I joined the ship, that ship was on a small run. We Hmm. were doing ports of US quite frequently. So almost every week or twice a week, I used to go ashore. I used to do shopping. Uh, सारा पैसा उड़ा दिया मैंने वहाँ पे, whatever whatever I earned, because how to say, the things are so good, and was अच्छा लगता है. राइट. तो जैसे आप जब अपनी वॉयज पे जाते हैं, जर्नी पे जाते हैं, तो कभी ऐसे मतलब डर नहीं लगता कि यार एनीथिंग बैड हैपेंस, और स्पेशली द इफ व्हाट इफ द वेदर गोज रॉन्ग, बिकॉज हमने तो सुना है दैट सी इज अनफॉरगिविंग. इट्स absolutely nature's one of the most brutal form if it takes. तो हाउ डू यू मेक अप योर माइंडसेट कि यार कुछ लाइक अगर मिसहैप हो भी गया विद रिस्पेक्ट टू वेदर, हाउ हाउ विल यू मैनेज दैट? एंड कोई एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा जब वेदर बहुत खराब हो और आपको डर लगा हो? Okay, well, see, the best thing about this profession is at most, the best safety measures are taken in every manner. ओके. So, considering for the voyage, the planning is done well in advance. हम्म. Okay, extra food, extra fuel, and everything is accounted for. Then about the weather also, we try to, minimize the effect of weather. हम्म. We slightly try to change the route, try to optimize the voyage as much as possible, हम्म. because the thing should be in the best advantage of the ship owner. हम्म. So, and further, see, obviously, the bad weather you can see every now and then at sea, but the ships are built in such a way that the influence or the damage is limited. हम्म. And furthermore, see, whichever kind of ship you join, okay. So accordingly, things have to be changed. Like the voyage has to be optimized for that purpose. हम्म. So we are very well prepared for all these conditions. So it has never happened that rough weather, even extreme rough weather, could cause any damage to our ship. हम्म. In most cases, we try to avoid those areas well in advance. But if we even reach there, so हम्म. we take the best possible routes. हम्म. ओके. पायरेट्स का मैंने बहुत सुना है कि ऐसे पायरेट्स वगैरह भी होते हैं. तो पायरेट्स मिले आपको कभी आपकी जर्नी पे, वॉयज पे? I have never seen a pirate throughout my career so far. Okay. And see, a few piracy incidents have occurred in the past, ओके. and see, extreme precautions have been taken regarding them. Nowadays, what happens, like these areas have been identified. So whenever the ships transit these areas, we take special precautions. The security on board is heightened. Then armed guards are also carried in certain areas. Uh, yeah, and if and there are other ways also, like there are convoys of ships. So multiple ships join a convoy with a navy ship. हम्म. So like that also they are able to transit. So हम्म. best precautions are taken wherever possible. हम्म. ओके. एंड कौन कौन से वो एरियाज है जहाँ पर मतलब जिनको थोड़ा रेड अलर्ट है वहां पे कि यहाँ पे पायरेट्स हो सकते हैं? Well, one of the most famous one, as you would have watched Captain Phillips, that movie where a Maersk line ship was hijacked. So this was in Gulf of Aden. This ओके. is near Somalia, the Horn of Africa. ओके. And there have been a few incidents around West Africa,
around the Singapore Strait. Oh, okay. Yeah. Hmm. So there all these precautions are taken. Hmm. Right. One of the scariest experience on your voyage that you've had. Can you share a little bit about that? क्या था? क्यों आपको डर लगा? Mm, well, initially when I was a cadet, Hmm. when I was a trainee, so that time when I saw rough weather for the first time, the Okay. ship was rolling, the items in my room they were moving because the ship rolls like this, like that because of the weather. So Hmm. that time I got pretty scared, but then I learned how to adapt with it. Hmm. मतलब ये Yeah. नॉर्मल है, जैसे हमने मूवीज में देखा है कि ऐसे सामान वामान गिर रहा होता है। ये नॉर्मल है मतलब। You get to see this very frequently. हम्म। It totally depends on the areas where your ship trades. In the tropical areas, like if you trade around the Gulf or coming to, the India हम्म। India or maybe going to Singapore. हम्म। So in these areas, you won't get much influence of the weather. But ओके। if you go further north or further south, then you have a bit of rough हम्म। weather. हम्म। ओके। राइट। तो मनन जी, अभी तक हमने बहुत सारे बेनिफिट्स गिनवा लिए, पर्क्स गिनवा लिए। वी पेंटेड अ वेरी गुड पिक्चर इन अ स्टूडेंट्स माइंड की मर्चेंट नेवी तो वन ऑफ द बेस्ट करियर्स है। बट आर देयर एनी कॉन्स, आर देयर एनी डार्क सीक्रेट्स दैट अ स्टूडेंट शुड कंसिडर बिफोर डिसाइडिंग टू गेट इनटू मर्चेंट नेवी? Okay, well, see, there are a lot of perks, so एक आध कौन तो बनता है, but I would say you have to be you need to have a very strong will. You need to be mentally prepared when you come on board ship. You हम्म। will be living away from your family, हम्म। and though good things always come at a price. हम्म। You will learn a lot when you join ship. You will earn good money, but then you need to be mentally prepared. For you can come across any situation. Even after the best precautions, also you might face some or little inconvenience at times. So हम्म। you have to be mentally prepared for that. हम्म। आई थिंक हाँ, मतलब द काइंड ऑफ पर्क्स दैट यू गेट, इतना तो रिस्क आई थिंक बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसे आपने मेंशन किया कि फैमिली से दूर रहना रहता है, तो अगर एक चीफ ऑफिसर हैं, जैसे आप चीफ ऑफिसर हैं, तो आप कितना टाइम यूजुअली बाहर रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, पूरे साल की अगर मैं बात करूँ तो? So when I go for a for a tenure, my हम्म। tenure is usually 3 to 4 months. So when you start initially, the tenure is usually about 6 months, and as you become senior, it comes to 3 to 4 months. तो फिर बाकी टाइम क्या करते हैं आप? Baki time you are on vacation, enjoy with the money that you have earned, spend time with your family. तो आपको सैलरी तो पर मंथली आता है ना? Yes. I mean, when you're working on the ship, that time you get money. हाँ। Once you are home, there are a few companies that pay you salary around the year, but ओके। mostly, in most of the companies, you get only paid once you are on board. ओके 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 ओके। बट कैन यू आस्क टू इंक्रीज दिस, बिकॉज क्योंकि जैसे कई लोगों को घर पे बैठना नहीं अच्छा लगता होगा, घर पे बैठ के मजा नहीं आता होगा, तो वो कैन दे रिक्वेस्ट द कंपनी टू इन्वॉल्व देम इन अनदर वॉयज और मे बी कवर एनी अदर रूट्स? Yes, of course. Whenever you want to join ship, usually in companies, they ask you for your readiness date. Whenever they ask you when you will be ready to join. So हम्म। if you want to amend your readiness, also just inform the company and they plan the ship for you accordingly. So हम्म। whenever you want, like there is no mandate that you have to stay at after completing a tenure, you have to stay at home for so many months. You can join whenever you want. ओके ओके ओके। बट वहां पे मतलब रिक्वायरमेंट भी तो होनी चाहिए ना, जैसे अगर आप एक्स एक्स कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पर अभी एक मतलब एक आपका टेन्योर है 3 से 4 महीने का, वो कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद फिर आप दोबारा अपनी अलॉटमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो कि, या फिर वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है वो?
कि अभी रिक्वायरमेंट है या नहीं है? See, you, when you join ship, then only you will get paid. Okay. Once you are home, you won't get paid. So if you want to join ship, just inform your company, and they plan the ship for you. They manage things in such a way that they can plan you for the ships. राइट. सो यूजुअली आप कितना टाइम काम करते हैं एक साल में अपने, नाउ दैट यू हैव रीच्ड द दिस लेवल इन योर करियर? Well, I just try to complete my criteria of 6 months, and that's it. ओके. 6 महीने Rest of the छुट्टी. time, that time I prefer to enjoy with my family, try to learn new things, explore, हम्म. do other things also. तो यू नो दिस मेक्स मी थिंक दैट एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर के पास और क्या एडिशनल स्किल्स होने चाहिए? डेफिनेटली ये तो पढ़ाई बहुत है, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, वेरी विजिलेंट, एंड आपका स्ट्रेटेजिक माइंडसेट होना चाहिए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आर देयर एनी skills that you believe that a student must have in order to become a really class apart merchant navy officer? Well, when you become a merchant navy officer in the training institute itself, they train you so well that you become very well groomed for the job. Right. So you definitely look a class apart when you join ships, when you visit other countries. And you can always evolve yourself, you can always Hmm. continue to learn new skills. When you're on board, you have a lot of free time after you finish your jobs. You have good time for yourself. You Hmm. can read books, learn new things. Many Hmm. people have started blogging also. Oh. And yeah, so there's a lot to do. There's a lot to do. Hmm. While you're on the ship also, right? That time also you have spare time. Yes, yes, of course. Hmm. Once you finish your job, you have good time for yourself. Hmm. Okay. Right. Um. So I think this brings us to the end of the podcast. But before we end, I have this special round that I call as Curious Candid, which is a rapid fire round, and you have to just quickly give the answers. Chale, ready? Okay, let's do this. Uh, Most memorable port you've ever docked at? Oh, Amsterdam. Okay. इसकी अलग स्टोरी होगी, कभी और सुनेंगे. But yeah, next question. One essential item you always carry on board. The laptop. Okay. It's a real essential, watching movies, uh, to do other jobs, and writing, whatever you want to do, you need a Hmm. laptop. Hmm. One word to describe the feeling when you're out on the open sea. Ah, full of peace. Oh, why peace though? Matlab, the sea is massive and it's so noisy. Well, once you be there, yeah, you'll get a gentle, cold breeze on your face. Hmm. You'll see a very clear sky. You can even see the stars at night. A lot of stars. You can, Hmm. figure out the constellations as well. Hmm. And yes, of course, the sound of sea itself it has its own charm. Hmm. But Okay. it's a very peaceful place to be. Right. Coffee or tea during the watch keeping duties? Ah, coffee is a must. Okay. The most rewarding part of your job? Well, definitely the money, Okay. and you get to travel the world. That is the best part. Hmm. We get to explore. I've been, almost to all continents. Hmm. Uh, and this is just, how to say, if you join a ship that goes worldwide, maybe within the first 6 months, you'll be able to see a lot of parts of the world. Hmm. Interesting. The biggest lesson the sea has taught you? So the biggest lesson is how little you need, because when you go on a voyage, you have to prepare yourself in advance. Hmm. You have to carry things with yourself.
Hmm. Maybe you might not get good internet, so you have to keep the movies that you will watch, the books that you will read, the food that you might crave for. So you come to know about yourself. You learn a lot about yourself in your friendship. हम्म वैसे तो वो लास्ट क्वेश्चन था बट मुझे एकदम से और क्वेश्चन आया एक और व्हाट डू यू मिस अबाउट योर होम द मोस्ट व्हेन यू आर ऑन द वॉयज Well, of course, the time with family is definitely the major missing. But you have to leave your family if you want to explore the world, right? हम्म खाना नहीं मिस करते हो वहां पे तो शिप पे तो बिल्कुल एकदम सारा सी फूड ही मिलता होगा ना नहीं, the chefs are great so far I've been with, and they can cook food of a lot of cuisines. So usually you don't get to miss the food at home. ओके 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 राइट Okay, thank you so much, Manan, for doing this. काफी सारे insights पता चले, and we really hope that students will also get a lot of knowledge from this podcast, a lot of insights, whatever doubts they may have with respect to this career. I hope उनके सारे clear हो जाएंगे. बाकी फिर भी अगर हमने कुछ भी चीज miss out कर दी हो, तो guys let us know in the comment section. बताइए जो भी doubts हैं, and आप मनन सर के साथ लिंक्डइन पर इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाइए बिकॉज ही इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट एंड बहुत अच्छे अच्छे व्यूज के जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर वो ट्रैवल कर चुके हैं वो भी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं सो डू फॉलो हिम देयर कुछ भी करियर एडवाइस चाहिए हो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मानन फॉर डूइंग दिस Thank you, Pooja. Likewise, it was a great session, and you have been a lovely host. I enjoyed this a lot. थैंक यू सो मच थैंक यू